Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss population ecology. Population, the number of individuals of species living in the same area at the same time, is called population. Population has two aspects. First is number of individuals of species. Second is area occupied by individuals of species. Clark in 1954 formed two types of population. First is monospecific, second is polyspecific. Monospecific, population of only one species living in the same area, is called monospecific, while polyspecific, which is also called as mixed populations of different species living in the same area, are called polyspecific. एक ही स्पीशीज के अफराद जो एक जगह पर रहते हैं पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला स्पीशीज के अफराद की तादाद, दूसरा स्पीशीज के अफराद की ऑक्युपाइड जगह। क्लार्क ने 1954 में दो तरह की पॉपुलेशंस बयान की, पहली मोनोस्पेसिफिक जबकि दूसरी पॉलीस्पेसिफिक। मोनोस्पेसिफिक से मुराद एक स्पीशीज की पॉपुलेशन जो एक जगह पर पाई जाती है मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहलाती है, जबकि पॉलीस्पेसिफिक, जिसे मिक्स्ड भी कहा जाता है, इससे मुराद मुख्तलिफ स्पीशीज की पॉपुलेशंस जो एक जगह पर पाई जाएं पॉलीस्पेसिफिक कहलाती है। Characteristics of population. Population has following characteristics like density, population dispersion or spatial distribution, natality or birth rate, mortality or death rate, age structure or distribution, population growth and competition. पॉपुलेशन की खसूसियात ये हैं, नंबर 1 डेंसिटी, नंबर 2 पॉपुलेशन डिस्पर्शन या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेस के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 नेटेलिटी या बर्थ रेट, नंबर 4 मोर्टेलिटी या डेथ रेट, नंबर 5 एज स्ट्रक्चर या तकसीम, नंबर 6 पॉपुलेशन ग्रोथ and number 7 competition. Density, the number of individuals living in a unit area is called density. For example, number of wheat plants in an acre etc. Large organisms like trees may be expressed as 100 trees per hectare. On the other hand, smaller and small organisms like phytoplankton may be expressed as 1 million cells per cubic meter of water. The unit of density varies in different species. Density may be numerical density or biomass density. Numerical density, number of individuals, is taken in numerical density. It is used when individuals in a population have uniform size. Biomass density, biomass per unit area or volume is taken in biomass density. It is used when size of individuals is variable. एक यूनिट एरिया में रहने वाले अफराद की तादाद डेंसिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक एकड़ में गंदम के पौधों की तादाद, बड़े जानदार जैसे कि दरख्तों को 100 ट्रीज पर हेक्टेयर बयान किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ स्मॉल और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स को 1 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मीटर वाटर में बयान किया जाता है। डेंसिटी का यूनिट मुख्तलिफ स्पीशीज़ में वेरी करता है। डेंसिटी न्यूमेरिकल डेंसिटी या बायोमास डेंसिटी हो सकती है। अफराद की तादाद न्यूमेरिकल डेंसिटी है। ये उस वक्त यूज़ होती है जब पॉपुलेशन में अफराद का साइज़ यूनिफॉर्म हो, जबकि बायोमास डेंसिटी बायोमास पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम की सूरत में
ली जाती है। ये उस वक्त यूज़ होती है जब पॉपुलेशन में मौजूद अफराद का साइज मुख्तलिफ हो। Types of density. Density has two types. First is crude density. Second is ecological density. Crude density. It is the number of individuals or biomass per unit of total area inhabited by the species. Ecological density. It is the number of individuals or the biomass per unit of that area actually inhabited by the individuals of the species. Generally, organisms clumped into groups. They are rarely uniformly distributed. Therefore, concept of crude and ecological density is used. For example, certain species of plants like Cassia tura are crowded in shady patches. Other areas are without plants. Thus, density calculated in shady area and open areas is crude density. On the other hand, density of only shady area is ecological density. डेंसिटी की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 क्रूड डेंसिटी, नंबर 2 इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी से मुराद टोटल एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ के अफराद की तादाद या बायोमास है, जबकि इकोलॉजिकल डेंसिटी से मुराद एक्चुअल एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ के अफराद की तादाद या बायोमास है। आमतौर पर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स की सूरत में इकट्ठे रहते हैं। इनकी बहुत कम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए क्रूड और इकोलॉजिकल डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ प्लांट स्पीशीज़ जैसा कि कैसिया टूरा शेडी पैचेस में ग्रुप की सूरत में ग्रो करते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर नहीं पाए जाते। शेडी एरिया और दूसरे एरियाज जहां पर प्लांट्स नहीं है की डेंसिटी क्रूड डेंसिटी है, जबकि शेडी प्लेसेस की डेंसिटी इकोलॉजिकल डेंसिटी है। Population dispersion. Dispersion is the special pattern of individuals in a population relative to one another. It is random pattern of distribution of individuals of a population over space. In nature, different biotic interactions influence the abiotic factors. There are three basic population dispersion. First is regular or uniform dispersion, second is random dispersion, and third is clumped dispersion. स्पेस के लिहाज से पॉपुलेशन में अफराद की एक दूसरे के लिहाज से डिस्पर्शन पॉपुलेशन डिस्पर्शन कहलाती है। इस तरह पूरी स्पेस में अफराद की रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फितरती तौर पर मुख्तलिफ बायोटिक इंटरैक्शंस एबायोटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्शन बुनियादी तौर पर तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, नंबर 2 random dispersion, and number 3 clumped dispersion. Regular or uniform dispersion. Here the individuals are more or less spaced at equal distance from one another. This is rare in nature, but it is common in crop fields like rice or wheat fields. Uniform distribution occurs when severe competition is present among the plants in a forest. रेगुलर या यूनिफॉर्म डिस्पर्शन में इंडिविजुअल्स के दरमियान तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पाया जाता है। ये सूरत नेचर में बहुत कम मिलती है, लेकिन ये राइस और वीट की फील्ड में कॉमन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होती है जब फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के दरमियान severe competition हो। Random dispersion. Here the position of one individual is unrelated to the position of its neighbor. In this case, the individuals are distributed
randomly. These are also less common in nature. For example, trees of shisham grow randomly in the field. रैंडम डिस्पर्शन में एक इंडिविजुअल की पोजीशन अपने नज़दीकी इंडिविजुअल की पोजीशन से रिलेट नहीं करती। इस केस में इंडिविजुअल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये सूरत भी नेचर में कम मिलती है। मिसाल के तौर पर शीशम के दरख्त फील्ड में रैंडमली ग्रो करते हैं। Clumped dispersion. Here individuals aggregate into patches. These patches are interspersed with no or few individuals. In this case, the individuals occur in scattered groups. Most populations exhibit this dispersion. Daily, seasonal weather and reproductive patterns cause clumping of trees. क्लम्प्ड डिस्पर्शन में इंडिविजुअल्स पैचेस की सूरत में इकट्ठे होते हैं। ये पैचेस भी बिखरे होते हैं। कुछ में चंद इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं और कुछ में कोई नहीं होता। इस केस में इंडिविजुअल्स स्कैटर्ड ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशंस में यही डिस्पर्शन पाई जाती है। डेली, सीजनल और रिप्रोडक्टिव पैटर्न की वजह से ट्रीज की क्लम्पिंग होती है। Natality or birth rate, the rate at which the new individuals are added to a population in a unit time is called natality. Population increases due to natality. Natality rate may be expressed as number of organisms born per reproductive organism per unit time. There are two types of natality. First is maximum natality, second is ecological natality. Natality या बर्थ रेट से मुराद वो रेट है जिस पर पॉपुलेशन में एक यूनिट टाइम में नए अफराद का इजाफा होता है। पॉपुलेशन नेटेलिटी की वजह से बढ़ती है। नेटेलिटी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म से यूनिट टाइम में नए पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म की तादाद की सूरत में बयान किया जाता है। नेटेलिटी की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 मैक्सिमम नेटेलिटी, नंबर 2 इकोलॉजिकल नेटेलिटी। Maximum natality. It is also called as absolute natality. It is theoretically maximum production of new individuals under ideal conditions. It means that there is no ecological limiting factor. Reproduction becomes limited only by physiological factors. It is constant for a given population. Such natality is not possible in nature. It is only used for comparison. मैक्सिमम नेटेलिटी को एब्सोल्यूट नेटेलिटी भी कहते हैं। इसमें आइडियल कंडीशन के दौरान नए अफराद पैदा होते हैं और इस तरह थ्योरेटिकली मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि कोई इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर से लिमिटेड होती है। ये दी गई पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट है। इस तरह की नेटेलिटी नेचर में पॉसिबल नहीं है। इसको सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। Ecological natality. It is also called realized natality. In this case, a population increases under an actual existing specific condition. Thus, it takes into account all possible existing environmental conditions. It is also called as fertility rate. Ecological natality को realized नेटेलिटी भी कहते हैं। इस केस में एक्चुअल मखसूस कंडीशंस के दौरान पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इस तरह ये तमाम पॉसिबल एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो सकती है। इसे फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। मोर्टेलिटी, द रेट एट विच द इंडिविजुअल्स आर लॉस्ट बाय डेथ
in a unit time is called mortality. If birth rate is more than death rate, then population is increased. If birth rate is less than death rate, then population is decreased. It has two forms: minimum mortality and ecological or realized mortality. मोर्टेलिटी से मुराद वो रेट है जिस पर यूनिट टाइम में डेथ की वजह से इंडिविजुअल्स कम हो जाते हैं। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। इसकी दो अक़साम हैं: नंबर वन मिनिमम मोर्टेलिटी, नंबर टू इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। Minimum mortality. It is also called specific potential mortality. It represents the theoretical minimum loss under ideal or non-limiting conditions. It is constant for a population. Ecological or realized mortality. It is actual loss of individuals under a given environmental conditions. It is not constant for population. It varies with population and environmental conditions like drought or those ecological hazards. मिनिमम मोर्टेलिटी को स्पेसिफिक पोटेंशियल मोर्टेलिटी भी कहते हैं। ये आइडियल कंडीशंस के दौरान थ्योरेटिकली डेथ की वजह से मिनिमम लॉस बताता है। ये पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट होता है, जबकि इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी मखसूस कंडीशंस के दौरान डेथ की वजह से एक्चुअल लॉस है। ये पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट नहीं होता। ये पॉपुलेशन और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसा कि ड्राउट वगैरह के लिहाज से वेरी करता है। एज स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स of different ages in the group is called age distribution. Individuals are of different ages in most of the populations. The proportion of individuals in each age group is called age structure of the population. The age groups are pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive. The ratio of different age groups is determined. It gives the current reproductive status of the population. ग्रुप में मौजूद मुख्तलिफ एज वाले अफराद की पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पॉपुलेशन में मुख्तलिफ एज वाले इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। हर एक ग्रुप में अफराद की प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर कहलाती है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स हैं। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की निस्बत मालूम की जाती है। ये पॉपुलेशन का करंट रिप्रोडक्टिव स्टेटस बताता है। एज pyramid, the model representing geometrically the populations of different age groups in the population of any group is called age pyramid. There are following three types of age pyramids. First is a pyramid with a broad base. Second is bell-shaped polygon. Third is an arch-shaped स्ट्रक्चर। ऐसा मॉडल जो कि किसी भी पॉपुलेशन में मौजूद डिफरेंट एज ग्रुप्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, एज पिरामिड कहलाता है। एज पिरामिड की तीन टाइप्स हैं। नंबर वन ब्रॉड बेस वाला पिरामिड, नंबर टू बेल शेप पॉलीगॉन, नंबर थ्री वेव शेप स्ट्रक्चर। A pyramid with a broad base. It shows a high percentage of young individuals. Birth rate is high in such populations. Each successive generation is more numerous than preceding one. Thus, it forms a pyramid with broad base. It occurs in many phytoplanktons in water.
ब्रॉड बेस वाला पैरामिड ऐसा एज पैरामिड है जो कि यंग अफराद की ज़्यादा परसेंटेज बताता है। इस तरह की पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज़्यादा होता है। नई नस्ल के अफराद पुरानी नस्ल की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इस पैरामिड की बेस ब्रॉड होती है। ये पानी में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन में पाया जाता है। Bell-shaped polygon. It shows a stationary population. Such population has equal number of young and middle-aged individuals. Here growth is slow and stable. Here pre-reproductive and reproductive age groups are more or less equal in size. The post-reproductive group remains the smallest. It is found in many trees. बेल शेप्ड पॉलीगॉन ऐसा एज पिरामिड है जो कि स्टेशनरी पॉपुलेशन को शो करता है। इस तरह की पॉपुलेशन में यंग और मिडिल एज के अफराद बराबर तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ ग्रोथ स्लो और स्टेबल होती है। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज तकरीबन बराबर होते हैं, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप स्मॉलेस्ट रहता है। ये बहुत से ट्रीज में पाया जाता है। An urn-shaped structure. It indicates low percentage of young individuals. It shows a declining population. Here birth rate is dangerously reduced. Thus pre-reproductive group becomes much smaller. Such situation occurs in conditions of stress like drought, etc. अनशेप या वेस लाइक एज ग्रुप यंग अफराद की परसेंटेज लो बताता है। ये बताता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है। यहाँ पर बर्थ रेट ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बहुत ही स्मॉलर हो जाता है। ये सिचुएशन स्ट्रेस जैसे कि ड्राउट वगैरह की सूरत में होती है। Dear students, here we can see different age pyramids. A is pyramid with the broad base, B is bell-shaped polygon, while C is an urn-shaped structure. Population growth. The number of individuals of population or biomass increased in a unit time is called population growth. There are different patterns of population growth. Some plants have rapid growth rate. They increase rapidly and reach the carrying capacity of the field. Then their death starts due to competition and shortage of nutrients. Some populations have uniform growth rate. Their death rate is equal to birth rate. Therefore, the population remains uniform. यूनिट टाइम में पॉपुलेशन के अफराद की तादाद या बायोमास में इजाफा पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। कुछ प्लांट्स की ग्रोथ रैपिड होती है और ये तेज़ी से तादाद में इंक्रीज़ होते हैं। फिर कंपटीशन और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से इनकी डेथ शुरू हो जाती है। कुछ पॉपुलेशन की ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। इनके बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर होते हैं, इसलिए ये पॉपुलेशन यूनिफॉर्म रहती हैं। Competition. The individuals compete with each other for space and nutrients. Intraspecific competition occurs within the same population. Individuals of the same species compete with each other. It is more fair competition because all the individuals have same ecological niche. Interspecific competition occurs between different species. It is less where different species of plants have different adaptations to compete with the other species. Individual space और nutrients के लिए compete करते हैं। Within same population intraspecific competition पाया जाता है, यानी same species के अफराद आपस में compete करते हैं। ये कंपटीशन बहुत सवेर होता है क्योंकि तमाम इंडिविजुअल्स की सेम इकोलॉजिकल निश होती है।
मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन पाया जाता है, ये लेस सेवेयर होता है। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अफराद में कंपटीशन के लिए मुख्तलिफ अडाप्टेशंस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।